Hi guys, in this lesson we are doing May June 2022 variant 12. So guys, how will I solve this? 2 upon 3 plus 1 upon 6. I'm going to write like this: 2 upon 3 1 upon 6. Then find LCM. That's going to be बच्चे आपका 4 plus 1 upon 6. That's what? 5 upon 6. 0.4 into 0.2. 4 twos is what बच्चे? 8. ये इसको करने का एक शॉर्टकट है. Then decimal place क्या दी हुई थी guys यहाँ पे? 4 and 2. That means 2 decimal place. Move 2 place at the back. So that's going to be 0.08. अब एक circle represent करता है 4 people. How many people were there for apple? 2. 8. So that means 2 circle. How many people should be there for banana? 3 circle represent 12 people. Orange के लिए 5 people थे. That means 1 circle and 1 quadrant. Then melon के लिए 1 entire circle and then 3 quarter of a circle. That makes 7 people. Now it says write down the mode. The mode is the value that has the maximum frequency. So the mode will be banana. Okay, so line L is the line of symmetry of the quadrilateral. So if you can see this point, line of symmetry means that the other point is on the other side of the line. So अगर A इधर अगर इधर line of symmetry है बच्चे mirror image कहाँ आएगी यहाँ पे. So my one coordinate will be 3, 4 and the other coordinate will be बच्चे आपका 4, 2. Then it says find out the difference between the temperature. So if I talk about the difference, it's always bigger value minus smaller value. That makes what बच्चे आपका 21. Then it says loop the thermometer measure the temperature correct to the nearest degree. At midnight, thermometer measure the temperature outside as -6. Find out the upper bound of the temperature outside at midnight. So guys, nearest degree means what? 1 upon 2. That's what बच्चे 0.5. So -6 का upper bound क्या होगा बच्चे? -5.5. And lower bound will be what बच्चे? -6.5. So my final answer will be -5.5. So the first thing is you make a line from A to B and measure that, and that's 9.1. And then आपको scale दिया हुआ है 1 centimeter is 2 kilometer. So 9.1 कितना होगा? X. Cross multiply and you'll get the answer of X. That's what? 18.2. For bearing from के बाद क्या लिखा है? A. तो आप नॉर्थ कहाँ बनाओगे बच्चे? A पे. Let's draw it. Then you measure with a protractor and the answer I'm getting is 72. Bearing को हम लोग हमेशा 3 digits में लिखते हैं. That's 072. Then comes simple interest. Its formula is interest is equal to PRT upon 100. Principal was given to us 250. Rate was given to us 1.5. Time was 100 or time was 4 years and divide by 100. Without calculator first I'm going to cancel it and my answer will be 15.
think, how do you convert millimeter square to centimeter square? देखो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 होता है, स्क्वायर में आपके जीरोस क्या हो जाते हैं, डबल, दैट मींस डिवाइड बाय 100, तो 85 millimeter square will become what, 0.85 centimeter square. Now in order to get the total shaded area, I'm going to minus the total rectangle by the triangle. So the rectangle area is what, 9, and the triangle area is what, 0.85. Subtract these both and you're going to get 8.15. Now, how to get the sum of interior angle of a polygon? So we add all the side, and meanwhile let's find out the sum of all interior angle. N minus 2 into 180, that's the sum formula, is equal to give you the sum of all interior side. So if I plug in 5 minus 2 into 180, I'm getting what, bache? 540. That's why I added all of this and equated to what? 540. And my A is what, bache? 145. Okay, so the first pattern has 5 dots, second one 8, third 11. So next will be 14 and then 70. So I see a common difference of 3. So whenever there is a common difference, what's the formula? A plus n minus 1d. A will be the first term, that's what? 5. N ko n रहने दो. Common difference is 3. So write down this in a simplified form. So my answer is bache 2 plus 3n. Then the next one, Shani has 100 counters. She uses some of the counter to make pattern 20. She uses all the remaining counter to make pattern k. तो सबसे पहले तो आप pattern 20 में counters needed देखोगे. So 3n plus 2 में आप 20 डालो. How much you are getting? 62. Then आपको पैटर्न के में बताना है कितने पैटर्न जाएंगे, तो 100 minus 62 is what बच्चे आपका 38. So it's going to be 3n plus 2 is equal to 38, and then you're going to solve this, and my answer will be k is equal to 12. Got this, guys? ओके जी, तो आप इन सवालात को कैसे करते हैं गाइस? सो रेड, ब्लू एंड ग्रीन, रेड एंड ब्लू का रेशियो 3:8 है, एंड ब्लू इज टू ग्रीन का 5:2. आप इन दोनों का एलसीएम निकालो. 5 and 8 का एलसीएम क्या होता है? 40. Multiply by 8, multiply by 5. So this will be multiplied by 5 and this by 8. So it's going to become red, blue, green. That's 15, 40, and what bache? 16. Now you need to write down the fraction of blue was. So 40, 15 plus 16 makes what? 31. That makes 40 upon 71. Then it says make a perpendicular bisector of PSR. Put the compass at point S, make a small arc. Then put the compass at this point, थोड़ा और खोल के make an arc, and जितना compass open हुआ है उतने से make an arc, and then make a line. Then it says बच्चे point X lies inside quadrilateral PQRS, and बच्चे आपको बोला हुआ है that is closer to PS than to PR. So guys, this region will be shaded. Got this? Hi guys. So you need to do it correct to three significant figures. In three significant figures, you see the next number 3 है तो 4 को देखो. 4 significant figure है तो 5th को देखो. तो 4th number is 5 या 5 से बड़ा, तो add 1 into the previous number.
That's 0.00203. Got this? डेसिमल के बाद zeros नहीं लिखते क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू नहीं होती. Now one significant figure is 9. 1 में हम लोग सेकंड को देखेंगे. Is 9 greater than 5? Yes, sir. So I'm going to add 1 to previous number under root 4 हो जाएगा. Now, one significant figure में see the second one. Is 3 less than 5? Yes. So you're going to add 0. So ये हो जाएगा बच्चे 6. But 63 की जगह 6 लिखना justified है? नहीं. क्योंकि 63 and 6 में बहुत difference है. So to keep the place value, you write 0 before the decimal. Then divide by 0.425. One significant figure is second digit को देखेंगे. Starting के non-zero count नहीं होते. Second digit is less than 5, तो ये हो जाएगा 0.4. Now, under root 4 is 2. 2 into 60 is 120. Divide by 0.4. I'm going to multiply this by what बच्चे आपका 10 and this by 10. 1200 upon 4. That's what? 300. Now, what's under root 9 की value 2? Cube root 64 is 4. 3 into 4, 12 squared. That's what? 144. अच्छा 4.5 and 5.5 के बीच में irrational चाहिए number. Irrational number क्या होता है? Pi or number written in under root that cannot be solved. Under root 2, under root 3, under root 5. So अंडर रूट 16 आपका क्या होता है? 4 होता है. अंडर रूट 25 आपका क्या होता है? 5. अंडर रूट 36 आपका 6 होता है. तो अगर मैं 25 के बिल्कुल करीब वाला नंबर लूं, लाइक अंडर रूट 26 लिख दो या अंडर रूट 24, that will definitely be in middle of 4.5 and 5.5. Got this? ओके जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको सारे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से हटाना है. पहले 2000 0.002 2 into 10 power minus 4 क्या होता है बच्चे? 1 upon 10 power 4. That makes 2 upon 10,000. That's equal to 0.002. And 2 into 10 power minus 2 क्या होता है? 2 into 1 upon 10 square. That makes 0.02. अच्छा अब कुछ बच्चे बच्चे ये गलती करते, यही आंसर्स लिख के आ जाते. No, you need to write down the answer that was given in the exact form in the question. So सबसे जो छोटा number है, it's this one. So I'm going to write 2 into 10 power minus 4. Then बच्चे उससे छोटा number 0.002. Then बच्चे this one 2 into 10 power minus 2 and then 2000. Got this? Now, this is the calculation using standard form and I need to solve this and find the correct value of n. Up a into 10 power minus 7 है, 5 into 10 power b is equal to 4 into 10 minus 16, right? Now, can I bring this b upper? Minus 7 minus b. 4 into 10 power minus 16. So a upon 5 is equal to 4. A आपका 20 आ गया. Now, minus 7 minus b is equal to minus 16 बच्चे. Minus b minus 16 plus 7 क्या होता है? Minus 9. So b 9 आ रहा है. अब सुनो. a 20 है. 10 power minus 7. Divide by 5 into 10 power 9. Is this in standard form ऊपर वाला? No sir, it's not. So आप क्या करोगे बच्चों? So I'm going to write this like 2 into 10 into 10 power minus 7. Divide by 5 into 10 power 9. This and this cancel out. 10 power 8 हो गया. So now
It's going to be 2 into 10 power minus 7 जो यहाँ पे है. My A value is 2. And it's going to be 5 into 10 power 8. क्योंकि ये 20 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसलिए अगर आपने ये आंसर लिख दिए, they were wrong. You got this? Now, directly proportional में हम क्या करते? Y is equal to K x minus 1 whole square. Y की वैल्यू is 5. Sorry, x की वैल्यू is 5 and y is 32. So let's plug that in. So 4 square. 32 upon 16 is equal to k. K आपका 2 आ रहा है. So I got the formula y is equal to 2x minus 1 whole square. Now, we need to find y when x is what? 2 minus 2. So minus 2 minus 1 whole square. 2 minus 3 whole square क्या होता है? 9. My answer will be 18. Got this? Okay. So in the first part it says draw a tangent at x equal to minus 1. Tangent is a line that touch the curve just once. तो minus 1 is here. तो ये लाइन ने एक बार कर्व को टच करा. अब ग्रेडियंट के लिए आप कोई भी दो पॉइंट उठा लो. एक तो -1.5 एंड 6.2 हमें दिख रहा है बच्चे. एंड दूसरा पॉइंट जो हमें दिख रहा है बच्चे, if I extend the line, it's what? 1 and 0. Then I'm going to find out the gradient by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. Got that? Next part थोड़ा challenging है, but let's find out gradient का answer. Now next part में आप कंपेयर करो बच्चे ओरिजिनल इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से. दोनों में डिफरेंस क्या है? +2 का डिफरेंस है, मतलब नीचे वाली इक्वेशन में +2 नहीं है. So if I want to make this exact like this, so I need to add 2 on this side. अगर बच्चे मैं इधर 2 ऐड करूंगा तो इधर भी 2 ऐड करना होगा. So it's going to become what? X cube upon 5 minus 3x plus 2 is equal to 2. Now compare in the question. क्वेश्चन में ये इक्वेशन लिखी हुई थी, इक्वल टू y लिखा था. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2. So that means we need to make a line at y equal to 2. And उस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चे कर्व, वो हमारा आंसर होगा. डू यू गेट दिस? लेट मी रिपीट दिस बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना. इस टाइप के सवाल में आप क्वेश्चन को कंपेयर करते हो ओरिजिनल इक्वेशन से. अब ओरिजिनल इक्वेशन में बच्चा +2 लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन की इक्वेशन में +2 नहीं लिखा हुआ. सो दैट्स व्हाई आई ऐड 2 हियर. सो जब मैं इक्वेशन के एक साइड पे 2 ऐड कर रहा हूं, तो दूसरी साइड पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन दोनों साइड से बैलेंस होती है. नाउ दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, but instead of here 2 it was written y. So can I say that y equal to 2? And y equal to 2 पे you make a horizontal line, and वो अब जिस point पे intersect करेंगे वो वाले x मेरे आंसर्स होंगे. Got this? गाइस, तो कौन से दो क्वाड्रिलेटरल है जिनको अगर मैं हाफ करूं बच्चे, सो दो
कॉन्ग्रेंट आइसोसलीस ट्रायंगल बनते, एक स्क्वायर है बच्चे एंड दूसरा बच्चे आपका कौन सा है, इट्स रोम्बस। अब बच्चे मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सो गाइस आई कैन क्लियरली सी एंगल ए एंड एंगल बी सेम। Angle A is equal to angle B. Why बच्चे? Because of alternate angles. Then दूसरी बात बच्चे, आप यहाँ पे देखो x midpoint of AB बोला है, तो you can say that AX is equal to XB because it's mentioned x is the midpoint. Then बच्चे तीसरी चीज I can clearly see that AC and then no, I can clearly see that these two angles are same. Angle X is the common angle in both. So based on angle side, they are congruent. Do you get this? In this one, अगर आप notice करो शेड कहाँ पे हुआ हुआ है? B से बाहर और A और C के बीच में. So that's why it's A intersection C and then intersection B complement. That's it. ओके जी, तो ADB कैसे आएगा बच्चे? सबसे पहले तो आप देखो ADB चाहिए, वो इसका आधा होता है. एंगल एट द सेंटर is twice than at the circumference. The 70 upon 2 is 35. Then BCD चाहिए. Guys, BCD is what? जब भी कभी diameter circumference पे मिलता है, but oh, it's not a diameter, my bad. BCD चाहिए. So how will I get BCD? So I need this. Right, बच्चे? Can you find this बच्चे easily? 180 minus 70 is what बच्चे आपका? 110. 110 divided by 2 is 55. Now, 55 plus 25 makes what बच्चे आपका? 80. तो बच्चे cyclical quadrilateral के basis पे 1 opposite side add up to 180 होता है. तो अगर ये side 80 है बच्चे, so 180 minus 80 is what? 100. Got this, guys? ओके, फैक्टराइज करना. सबसे पहले 4 6 के फैक्टर ढूंढेंगे. दैट्स व्हाट? 24. देन बच्चे आपने कांस्टेंट से पहले वाला साइन देखा माइनस है, तो ऐसे दो फैक्टर यूज करेंगे जो सब्ट्रैक्ट होके 5 बनाए. तो 8 माइनस 3. एंड फैक्टराइज में इक्वल टू 0 नहीं लिखते गाइस. फैक्टराइज में कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखते.
and you leave your answer here only. You get this? देन जब पावर नेगेटिव होती है मेरा बच्चा, तो आप पहले उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकेट कर देते हो। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 power -2 and x⁻−3। अब इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया बच्चे। सो ये हो गया 2 power -2, दैट्स 2 squared, that's 4। गॉट दिस बच्चों? Now probability of not choosing letter E, कितने E थे बच्चे? 2। Total 9 थे, तो remaining letter will be 7/9। Then she take two tiles without replacement. Find the probability that both has the same letter. तो same letter कौन कौन से हो सकते हैं? या आपका S हो सकता है, या E। So if I talk about S and S, so S कितने थे? 3 थे, तो 3/9 पहला ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 2/8 दूसरा ले लिया। और देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ई कितने थे टोटल? 2/9 and the second e is 1/8, so I got 1/9। Okay, so I'm supposed to find out the area of the sector, but the thing is I'm not given with the angle of the sector, so 360 minus 80 makes what बच्चे? 280। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 into pi r square। So I'm going to just find out the area by this। Got this? फिर बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना है। I'm going to cross multiply and solve for x। In the last question, first you'll find out the LCM। एलसीएम आने के बाद मेरा बच्चा एक बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चा करता है, अगर वो माइनस के बाद ब्रैकेट्स इंक्लूड नहीं करे। सो सी 3 into हो जाएगा बच्चे 2x+1 एंड 5 into क्या होगा बच्चे? x-2। प्लीज पुट दिस ब्रैकेट, अदरवाइज आप -5 into x करोगे बट -5 into -2 मिस कर दोगे। प्लीज डोंट मेक सच मिस्टेक्स। Okay, G. So the first hint that's given to us is what? OC is to CR 2 is to 3। OR चाहिए, तो OR is what? OC plus CR। अब OC की तो वैल्यू हमें पता है C। हिंट क्या दी हुई? OC upon CR। OC is 2 and CR is 3। OC की वैल्यू I know is what बच्चे? C। So that means CR will be 3C/2। So अगर 3C/2 plus C करते हैं बच्चे, I'm going to get what? 5/2C। तो OR मिल गया guys। Then I need CQ। How will I get CQ? It's going to be CR plus RQ। CR का आंसर आपने अभी ढूंढा है बच्चे। RQ के बारे में हिंट दी हुई है नीचे। ये 1 है, ये 4 है, नो ये 3, क्योंकि द एंटायर OP is 4। सो अगर OA A है, सो OP क्या होगा? 4A। ये मैंने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर दी बच्चे। I got this। So what's RQ? 4A। तो CQ will be CR
plus R cube. So that's going to be 5 upon 2c, sorry, 3 upon 2c plus 4a. Then area चाहिए. Then for area, it's going to be, let's find out the area of this triangle. So it's half AB, that's A into C into sine angle O. And I'm going to multiply this by what, bache? 2. Is to the area of the other bigger triangle. Parallelogram is divided into two triangles, right? Let's find out the area of this triangle. Half into 5.2c into what was OP, guys? 4a, right? Into sine O. So this 2 cancel out, half cancel out, C and C cancel out, A and A is cancel out, sine O is cancel out. So what I'm left here, guys, nothing, that means 1. And what I'm left here, guys, this cancel out 2 and 4, so it's going to be 10. Do you get this, bacho? That's it for May June 2022 variant 12.